दोस्तों जानेंगे आज हम फिल्म शक्का के बारे में जो कि एक एक्शन फिल्म रही थी 1981 में। प्रोड्यूस करा गया था फिल्म को बाय कैलाश चोपड़ा अंडर द रूप एंटरप्राइजेज बैनर और डायरेक्ट करा गया बाय श्याम रल्हान। स्टारिंग की बात करें तो फिल्म में नजर आए जितेंद्र, Simple Kapadia, and music was composed by Rajesh Roshan. अदर दिन दिस बात की जाए डायलॉग्स, स्क्रीन प्ले और फिल्म से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स की जो कि रहे थे। डायरेक्शन तो रहा था श्याम रल्हान का, वहीं फिल्म लिखी गई थी बाय कादिर खान। कादिर खान ने फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे, जबकि स्क्रीन प्ले रहा था के शुक्ला का और स्टोरी भी श्याम रल्हान की रही, साथ ही डायरेक्शन की। सिनेमेटोग्राफी दी फिल्म में नंदो भट्टाचार्य ने, जबकि एडिटिंग करा था BS ग्लैड ने। हिंदी में रिलीज हुई थी और इंडिया में फिल्म रिलीज करी गई। बात की जाए फिल्म की से रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स जिसकी वजह से फिल्म पॉपुलर रही। फिल्म का जो गाना था यार तेरे सब नाच रहे हैं, जो कि मोहम्मद रफ़ी जी की तरफ से रहा। टिल द डे इट इज़ वेरी पॉपुलर और काफ़ी जो है सुना जाता है शादियों में ड्यूरिंग द ओकेजन ऑफ बारात डिपार्चर टू दुल्हन हाउस। म्यूज़िक की बात करें तो फिल्म में गाने जो रहे हैं सुन मेरे यार, दुनिया वाले, अपने बड़े बेगाने हैं वॉज सिंग बाय किशोर कुमार, यार तेरे सब नाच रहे हैं वॉज संग बाय मोहम्मद रफ़ी, अगा बाय मायके तू जाओ नको वॉज ऑल्सो संग बाय मोहम्मद रफ़ी, मोहब्बत हुई मेरे दैया वॉज संग बाय मोहम्मद रफ़ी एंड उषा मंगेशकर। तो वही तेरा वो रास्ता मेरा वो रास्ता वॉज ऑल्सो संग बाय मोहम्मद रफ़ी अलॉन्ग विद आशा भोसले। कास्टिंग की बात करें तो फिल्म की जो कास्टिंग रही है काफ़ी अच्छी कास्टिंग रही है, काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ एक्टर्स रहे हैं, जिसमें कि कैरेक्टर्स वर प्लेड बाय जो मेन लीड में थे जितेंद्र किरदार निभा रहे थे शाका का, सिंपल कपाड़िया एज मीना, ज़ाहिरा वॉज ऑल्सो एज मीना, दो मीना रही फिल्म में, प्रेम चोपड़ा एज प्रेम, कादर खान एज काजिम भाई, हेलेन एज जानकी, निरूपा रॉय एज गीता, ओम शिवपुरी एज कैप्टन धर्मदास, सत्येंद्र कपूर एज सत्यन, चंद्रशेखर एज पुलिस इंस्पेक्टर, पिंचू कपूर एज जॉन, पेंटर एज jail inmate, Ram Mohan was also as jail inmate, बिरबल, पेंटल, राम मोहन और बीरबल तीनों ही किरदार निभा रहे थे जेल इनमेट का, वेयर जगदीश राज एज रघु, कमलदीप एज बग्गा और शीतल भी साथ में किरदार निभाती हुई नजर आई। प्लॉटिंग की बात करें तो फिल्म रिवॉल्व अराउंड करती है एक डार्क नाइट, सम डार्क बिजनेसमैन और कुछ एनिमीज ऑफ आवर नेशन के अराउंड that entered the house of an honest, country loving person to save their lives. They ruthlessly murdered Shaka's parents in front of him. Shaka जो कि उस टाइम 12 ही साल का था, somehow managed Shaka somehow managed to escape and ran for his life, did not stop in the race of life, and he had a long way to go. His destination unknown, his aim was to find those murderers, those masked killers who had killed his parents, and he had to unmask them. दिन बीतते गए, साल भी बीत गए, and childhood went and came manhood. Shaka had all the power of youth and also the blood of his brave parents, which was like lava bubbling within him. Impatient था to turn his enemies to ashes. Order to reach those murderers, Shaka had to cross all those paths filled with crime and poison. Those paths which change a man to a devil,
Shaka also became like a devil in his neighborhood and he became one of the group of devils who was responsible for the murder of his parents. On this road of crime, Shaka met Meena, who was a renowned thief, and she too, like Shaka, was lonely in life, brought up by a criminal and left alone on those roads of crime. When Shaka was very near to his destination, he learned that the real culprit behind the murder of his parents was Seth Dharmdas, जो कि अब लीड कर रहा था लाइफ ऑफ अ वेरी रिच नोबल मैन की. On one hand, Shaka's heart was filled with hatred because of the bloody incident in his childhood, but on the other hand was a streak of love, Meena's love, that Meena, with whom he had spent several hours playing at the seaside, used to collect all kinds of shells for his Meena and see the wonders of it. Today, the girl thief Meena is the same Meena of his childhood days. Shaka had found his lost love, but when he came to know that his Meena was a daughter of the real murderer Seth Dhandas, he was stunned because there was one Meena in Seth Dhandas' house and Shaka believed her to be the real मीना. फिल्म की जो प्लॉटिंग रही काफ़ी जो है हद तक एक एक्शन भरी रही. कुछ पॉइंट आया था लव का, लेकिन बावजूद एंड में वही लव जो है एक दुश्मनी में भी बदल गया जब रियलिटी पता चली थी. बात की जाए फिल्म के किरदारों के बारे में जो कि फिल्म में बखूबी का किरदार को निभा रहे थे. सबसे पहले जानते हैं जितेंद्र के बारे में जो कि लीड रोल शाका का किरदार निभाते हुए नजर आए फिल्म में. जितेंद्र जो कि एक जाना माना नाम रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री का. एंड बात की जाए ओरिजिनल नेम की जो कि था रवि कपूर, इज़ एन इंडियन एक्टर एंड ऑल्सो अ प्रोड्यूसर. बेसिकली उनका जो काम रहा है हिंदी फिल्म्स में उसके लिए जाने जाते हैं एंड ऑल्सो फॉर हिज डांसिंग स्किल्स. वॉज awarded a Filmfare Lifetime Achievement Award in 2003 and the Screen Lifetime Achievement Award in 2006. Is known for his appearance in the remakes of Telugu films during the 1980s, in which he was frequently cast opposite Sridevi and Jaya Prada. Also serves as the chairman of the Balaji Telefilms, बालाजी मोशन पिक्चर्स और ALT एंटरटेनमेंट में भी. बात की जाए करियर की तो हिज एक्टिव करियर जो कि एक्टिंग का रहा स्पैन द 1960s टू द 1990s. पहला मेजर ब्रेक उन्हें मिला था विद वी शांताराम्स गीत गाया पत्थरों ने इन 1964 में एंड बूंद जो बन गए मोती इन 1967 में. However, it was the film first in 1967 that served as his stepping stone to success. The t-shirt and the white shoes he picked up for a retail store for the Mast Baharo Kame Ashik number जो कि काफ़ी फेमस रहा था from the film first, एक ट्रेडमार्क भी बन गया. And followed by films जैसे कि कारवां and Hamjoli, in which he had more dance numbers. His vigorous dancing in the films won him the epithet Jumping Jack of Bollywood. He has acted in nearly 200 films as the main lead, a feat matched by just a handful of his peers since the inception of Hindi cinema. Frequently pair up की बात करी जाए तो रहा उनका with actresses like Jaya Prada या फिर Sridevi for remakes of Telugu films by T. Rama Rao, K. Bapaya, K. Raghavendra Rao and Dasari Narayana Rao. These included Sanjog, Aulad, Majal, Justice Chaudhary, Mawali, Himmat Wala, Tofa
and also acted in many remakes in Hindi of Krishna's Telugu movies and had very close association with him. Besides these South Indian remakes, there was a subdued side of him where whenever he had worked with the writer lyricist Gulzar in films such as परिचय किनारा खुशबू और काफ़ी अच्छे सॉन्ग पेंड अप रहे थे उनके साथ such as O माझी रे मुसाफिर हूँ यारो एंड नाम गुम जाएगा that was composed by Rahul Dev Burman and sung by किशोर कुमार। फिल्म्स की बात करी जाए उनके करियर की तो काफ़ी जो 200 फिल्म्स रही हैं नियरली, उनमें से कुछ फिल्म्स रहीं जैसे कि नवरंग, गीत गाया पत्थरों ने, गुनाहों का देवता, फर्स, बूंद जो बन गए मोती, परिवार, सुहागरात, मेरे हुजूर, धरती काहे पुकारे, दो भाई, जीने की राह, बड़ी दीदी, जिगरी दोस्त, अनमोल मोती, विश्वास, द गोल्ड मेडल, खिलौना, माँ और ममता, जवाब, हिम्मत, हमजोली, मेरे हम सफ़र, नया रास्ता। तो वही 70s में रहे इन फिल्म्स लाइक बिखरे मोती, कठपुतली, चाहत, एक नारी एक ब्रह्मचारी, कारवां, बनफूल, एक हसीना दो दीवाने, एक बेचारा, शादी के बाद, भाई हो तो ऐसा, परिचय, रूप तेरा मस्ताना, यार मेरा, अनोखी अदा, जैसे को तैसा, विदाई, रोटी, खुशबू, उम्र कैद, आखिरी दाव, रानी और लाल परी जैसी काफ़ी और फिल्म्स रही हैं जो कि फिल्म्स रही मोस्टली जो है रीमेक्स भी रहे हैं उन फिल्म्स के और नोवेल बेस्ड फिल्म्स भी रही हैं उनके करियर में, जैसे कि संकोच जो कि बेस्ड थी नोवेल परिणीता पे, नागिन जो कि एक इंस्पायर हुई थी बाय फ्रेंकोइस ट्रॉफेट्स फ्रेंच फिल्म द ब्राइड वॉर ब्लैक, बेस्ड थी कॉर्नर वुलरिट्स की नोवेल पे जो कि सेम नेम के साथ लॉन्च अप हुई थी, एंड फिल्म्स लाइक धर्मवीर, दिलदार, जमानत, पलकों की छाँव में, बदलते रिश्ते, चौकी, नामावान, टक्कर, मांग भरो सजना, आशा और काफ़ी सारी फिल्म्स भी रही हैं। अवार्ड्स की बात करी जाए उनके करियर की तो वॉज द रेसिपिएंट ऑफ गेस्ट ऑफ ऑनर अवार्ड इन द 18th उजाला सिनेमा एक्सप्रेस अवार्ड्स, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द जी गोल्ड बॉलीवुड मूवी इन न्यूयॉर्क, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड एट अटलांटिक सिटी स्क्रीन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, सेंचुरी टेलीविजन लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड, जी सिने अवार्ड फॉर टाइम अचीवमेंट एंड लायंस गोल्ड अवार्ड, मोस्ट एवरग्रीन रोमांटिक हीरो का भी किरदार उन्होंने अपने नाम करा। तो वहीं सिंपल कपाड़िया जो कि मीना का किरदार निभा रही थी फिल्म में वॉज अ हिंदी फिल्म एक्ट्रेस और एक कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी रही, वॉज एक्टिव इन हर प्रोफेशनल करियर फ्रॉम 1987 until her death in 2009। करियर की बात की जाए तो एक्टिंग करियर उनका रहा था डेब्यू इन द 1977 एट द एज ऑफ 18 in the role of Sumita Mathur in the film Anurodh with her brother-in-law actor Rajesh Khanna. Starred opposite Jitendra in Shakka and also in Chakravyuha. Played supporting roles in films like Loot Maar, Zamane को दिखाना है, जीवन धारा, दूल्हा, बिकता है। 1985 में she starred in the art film रह गुजर opposite Shekhar Suman. Her last acting gig was an item song for Parak in 87.
तो वही कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर का किरदार निभाया उन्होंने, जो कि एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर रही थी। After a final acting gig, became costume designer and designed for actors such as Sunny Deol, Tabu, Amrita Singh, Priyanka Chopra, Shri Devi. तो वही 94 में she won National Award for Costume Design in Rudali. She later designed for Indian movies including Rok Sako To Rok Lo and Shaheed also. फिल्म्स रही उनकी सच एज एहसास, मनपसंद, लूटमार, जीवन धारा, प्यार के दो पल। एज एन एक्टिंग करियर रही उनकी और साथ ही कुछ और फिल्म्स भी। तो वहीं एज अ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर की बात करें तो रही फॉर इंसाफ, शहजादे, दृष्टि, लेकिन, अजूबा, डर, आज की औरत, रुदाली, बरसात, घातक, लेथल, जान, उफ ये मोहब्बत, गफला, नक्शा, सोचा न था, द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई, कसम, प्यार जिंदगी है, ये है मुंबई मेरी जान, इंडियन, चाची 420 जैसी काफ़ी और फिल्म्स। तो वहीं अवार्ड विनर रही थी एज अ नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर फॉर द फिल्म रुदाली, जो कि बेस्ट कंसिडर करा गया था उनका अब तक का। जहीरा जो कि किरदार निभा रही थी मीना का फिल्म में, debuted in the James Bond movie On Her Majesty's Secret Service in 1969, credited as Zara, played the role of an Indian girl, acted in Bollywood movies over the next decade, appeared in a lead role for the first time in Call Girl in 1974, a movie with a controversial theme at that time. Also had roles in Aadmi Sadaka, Naukri, and one of her hit films was Gambler with Devanand, Shatrughan Sinha, Zahida, and Jeevan. Has worked in a few Punjabi movies as well. Used to write her name Zahira. फिल्म्स की बात करें तो देखी गई विद दैट इन अनोखा दान, अनजान राहें, आलिंगन, कॉल गर्ल, तूफान और बिजली, जिंदा दिल, मेरे सरताज, धर्मात्मा, टैक्सी टैक्सी, काला आदमी, आहूति, नौकरी, खुदा कसम, दो खिलाड़ी जैसी कुछ फिल्म्स रही हैं उनके करियर की। ये काफ़ी अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन रहा था इन द सीरीज ऑफ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर।
दोस्तों बात करते हैं फिल्म के अगले किरदार प्रेम चोपड़ा की, जो कि फिल्म में सेम नाम के साथ नजर आए। एक जाने माने एक्टर हैं हिंदी फिल्म इंडस्ट्री और साथ ही साथ पंजाबी फिल्म्स में भी। फिल्म्स की बात करी जाए तो हैज़ एक्टेड इन अराउंड 380 फिल्म्स ओवर अ स्पैन ऑफ ओवर 60 ईयर्स। सॉफ्ट स्पोकन डिक्शन रहा है बावजूद विलेन के रोल्स के, यानी कि काफ़ी हद तक उनकी जो करियर की फिल्म्स रही हैं उन्होंने विलेन का रोल निभाया है, जिसमें कि उनकी 19 फिल्म रही हैं एज अ एंटागोनिस्ट और राजेश खन्ना के साथ लीड रोल में, and remain popular with audience and critics as well। बात की जाए करियर की तो शुरुआत करी थी 1960s में, बिगनिंग का दौर रहा था 60 to 67 का, जिसमें कि इन शिमला ही डेवलप्ड एन इंटरेस्ट इन एक्टिंग as he had begun to take part in many plays in his college days. Despite stiff opposition from his parents, managed to go to Bombay to pursue his dream of acting in Bollywood films. Initial days में he stayed at guest house in Colaba, Bombay में and started visiting film studios to display his portfolio. रिस्पॉन्स काफ़ी जो है इनक्रेजिंग नहीं रहा, बावजूद इसके ही सर्वाइव in the fast life of Bombay, took up a job with the Times of India while trying to gain a foothold in the film industry. Looked after circulation of the paper in Bengal, Odisha, and Bihar, and was required to tour 20 days a month, and used to cut his touring time by calling the agents to come and meet him at the station so that he could quickly return. This way, a tour that would normally take 20 days would get completed in 12 days, and he would spend the rest of the time going from one studio to the other. And while traveling by the suburban train, one day a stranger accosted him and asked if he was interested in joining films, and with a nodded agreement and went with that stranger to Ranjit Studios, where the producers of Chaudhry Karnal Singh were in search of a hero. Later, during his stint with the Times of India, worked in Punjabi films including Sapni and Hindi films जैसे कि वो कौन थी, शहीद, मैं शादी करने चला and तीसरी मंजिल. He did not consider acting as a full-time profession in the early 60s, but he kept trying to get roles in films due to his passion for acting. Among his early films, he played Sukhdev in Shaheed, one of his rare positive leading roles, and had done 4 films before Wo Kaun Thi. Box office hit of 1964 had released. Later, after Ukka in 1967, left the Times of India to concentrate solely on acting, जो कि काफ़ी अच्छा करियर उनका शुरुआत हो गया था, and he was being established actor by 1969 to 95, जिसमें कि 1967 से he has been a leading villain in Hindi films, and his peak period as main villain was from 1967 to 95. 1970s में he got plum roles as villain, often with Sujit Kumar and Panu Ranjit. In a few films, he played secondary villain to villainous characters of Ajit, Madan Puri, Pran, Premnath, Jeevan. तो वहीं 70s और 80s में Anto Ambesh Puri and Amjad Khan in the late 80s. क्रिटिकल अक्लेम मिला उन्हें विद कॉमेडी फिल्म हलचल से 1971, जो कि रीमेक थी अनुभवम पुदुमई की. He played the lead role in this suspense thriller, played the main lead in the 1970s box office hit
small budget comedy film Samajh Ko Bazal Dalo as lead hero and was paired opposite Telugu film actresses Kanchana and Sharda. The song sung by Rafi and picturized on Prem Chopra, तुम अपनी सहेली को इतना बता दो कि उसे कोई प्यार करने लगा है from this 1970 film and the song Raha Mein Kalia. A song sung by Kishore Kumar and performed on screen by Prem Chopra in the film Nafrat 1973 में जो कि बॉक्स ऑफिस फ्लॉप रही और कंटिन्यू रहे बावजूद इसके टू बी अ पॉपुलर इन द फिल्म इंडस्ट्री। देखा जाए तो एक रेगुलर रहे हैं इन विलेनियस रोल्स में इन फिल्म्स विद राजेश खन्ना इन द लीड रोल फ्रॉम 1969 to 71 from Dolly in 1969 till घर परिवार 1991 में। तो वहीं जो दोनों का एक डुओ रहा है प्रेम चोपड़ा और राजेश खन्ना का acted in 19 films together and 15 of them were box office hits.
दोस्तों बात करते हैं प्रेम चोपड़ा की लेट करियर की, यानी कि 1996 से लेके अब तक की। तो 96 के बाद ही अपीयर्ड एज अ विलन इन वेरी फ्यू फिल्म्स। उसके बाद उन्होंने पॉजिटिव कैरेक्टर रोल्स लिए हैं 1996 से एंड स्टार्टेड गेटिंग मोर पॉजिटिव रोल्स फ्रॉम 2007। उनका जो स्क्रीन स्पेस रहा वो रिड्यूस होता गया 2007 के बाद से एंड कंसिडर्स that his best roles were in films such as शहीद, उपकार, पूरब और पश्चिम, दो रास्ते, कटी पतंग, जादू टोना, काला सोना, दो अनजाने, दोस्ताना, क्रांति, जानवर, ऊंचे लोग, इंदिरा, फूल बने अंगारे, बेवफा से वफा, and the 19 films with Rajesh Khanna also. Later, he considers that his best performances in a positive roles comes in films like Sikandar-e-Azam, Kuwari, Shaheed, Jadoo, Tona, and Chori Chori Chupke Chupke. He also disclosed in an interview that my films with Rajesh Khanna are very special to me, right from Doli, then Do Raste, Kati Patang, Daag, Ajnabi, Prem Nagar, Mahachor, Mehbooba, त्याग, बेबस, जानवर, सौतन, मकसद जैसी काफ़ी सारी फिल्म्स। तो वहीं 15 of 17 released were hits, and each of those films showed different shades of my personality in villainous roles. When asked how he could continue so long in a cinematic career, he quoted that although I came to be a hero, my films as a leading man flopped, which was good in a way because a whole new world opened in front of me. There were so many more roles I could do. When I established myself as a villain, it could continue for years और फिल्म्स की बात करें उनके करियर की तो काफ़ी सारी फिल्म्स रहीं, जिसमें कि 1960s की फिल्म जैसे कि हम हिंदुस्तानी, चौधरी कर्नल सिंह जो कि पंजाबी मूवी रही, फॉलोइंग में मैं शादी करने चला, ए धरती पंजाब दी जो कि अगेन एक और पंजाबी मूवी थी, फॉलोड बाय सपने, वो कौन थी, शहीद, सिकंदर ए आज़म, निशान, पूनम की रात, मेरा साया, तीसरी मंजिल, लाट साहेब, ए हाय मेरा दिल, दो रास्ते, एक श्रीमान एक श्रीमती, वारिस, डोली तो 1960s की फिल्म रही। फॉलोअप में कुछ और फिल्म्स भी रहीं। 70s में आई प्रेम पुजारी, समझ को बदल डालो, पगला कहीं का, कटी पतंग, दास्ता, राजा जानी, गोरा और काला, बॉबी, जुगनू, गहरी चाल, काला सोना, दो जासूस, लगाम, बेरंग, महाचोर, दो अनजाने, इमाम धर्म, जागृति, आधा दिन आधी रात, डार्लिंग डार्लिंग, जादू टोना, ड्रीम गर्ल, त्रिशूल, दो मुसाफिर और कुछ और फिल्म्स रहीं उनकी 1970s में। फॉलोड बाय 80s दैट वर दोस्ताना, आंचल, अली बाबा और 40 चोर, लूट मार, सबूत, धन और दौलत, निशाना, शक्का, नसीब, देश प्रेमी, सवाल, हथकड़ी, मवाली, बेताब, प्रेम तपस्या, पुकार, अंधा कानून, काली बस्ती, स्वर्ग से सुंदर, इल्ज़ाम, हवालात, चरणों की सौगंध, जंगबाज, गरीबों का दाता, संतोष, आखिरी बदला, कानून का हर्ज, घराना, मजबूर, फॉलोड बाय 90s बेवफा से वफा, मेरे साजना, साथ निभाना, आओ प्यार करें, चीता, जवाब, आजमाइश, नमक, जुल्म सितम,
तो वही 2000 के अराउंड फिल्म्स लाइक मिस्टीरियस शक, शिकार, वो तेरा नाम था, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, वाह लाइफ हो तो ऐसी, खुल्लम खुल्ला प्यार करे, बंटी और बबली, धमाल, बुड्ढा मर गया, अंडर ट्रायल, ब्रोकन थ्रेड, हमसे है जहां, खुशबू, दिल्ली चेन, डैडी कूल। एडिंग टू इट 2010 की रही गोलमाल 3, लूट, मिर्च, डिस्को सिंक, ऑनर किलिंग, आई लव न्यूयॉर्क, उड़नछू, रंगीला, राजा, लाइन्स ऑफ डिसेंट, डिस्को सिंग एंड मोर फिल्म्स लाइक। तो मैं 2020 में आई। 20 के बाद 2021 में नज़र आई थी बंटी और बबली 2। अवार्ड्स की बात करें तो ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर द फिल्म हिम्मत इन फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, ऑल्सो फॉर दो अनजाने, महबूबा, अटलांटिक सिटी के लिए लेजेंड ऑफ इंडियन सिनेमा अवार्ड। Among other awards won, the Giants honored him with the Lifetime Achievement Award, and he has been honored with the Lions Club Award, Ashoka Award, Ashirwad Award, and the Punjabi Kala Sangam Award जैसी काफ़ी और भी अवार्ड्स उन्होंने विन करे अपने करियर के दौरान, जो कि काफ़ी उन्होंने कंट्रीब्यूट करा था इन द फिल्म इंडस्ट्री। कादर खान की बात की जाए, जो कि फिल्म में किरदार निभा रहे थे काजिम भाई का। कादर खान जो कि एक फेमस एक्टर होने के साथ साथ स्क्रीन राइटर, फिल्म डायरेक्टर, कॉमेडियन भी हैं। एज एन एक्टर अपीयर्ड इन ओवर 300 बॉलीवुड फिल्म्स after his debut film in the 1973 film Dog, starring with Rajesh Khanna, in which he acted as a prosecuting attorney as well. Also a prolific screenwriter for Bollywood films in the period of 1970s to 1999, and also wrote dialogues for 200 films. And Khan graduated from Ismail Yusuf College affiliated to Bombay University. फिल्म इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले ही taught at M.H. Sabu Siddiq College of Engineering, Mumbai, and as a professor of civil engineering also. करियर की बात करें तो जैसे कि हमने जाना, he has acted over 300 फिल्म्स में, हिंदी और उर्दू में, जबकि डायलॉग्स लिखे थे over 250 Indian films के लिए, from the 1970s up to the turn of the 21st century, at the insistence of Rajesh Khanna. Manmohan Desai paid him the high amount of 1,21,000 for writing dialogues for the film Roti, जो कि प्रोड्यूस करी थी खन्ना ने खुद, and most popularly recognized for working with actors like Amitabh Bachchan, Rajesh Khanna, Feroz Khan, Mithun Chakravarti, Govinda, Anil Kapoor, Jitendra, and the films directed by K. Raghavendra Rao, K. Bapai, Narayana Rao, Dasari, David Dhawan, and has worked side by side with other comedians like Azrani, Shakti Kapoor, Johnny Liver, and co-stars रहे हैं उनके साथ अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान, अनुपम खेर, and many films. Played a large variety of parts in different genres of films जैसे कि कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, फैमिली, सोशल, पॉलिटिकल जैसे काफ़ी सारे वैरायटी उन्होंने निभाई है। डेब्यू करा था विद द फिल्म दाग, जिसमें कि स्टारिंग रहे राजेश खन्ना इन द मेन लीड रोल, where he played the supporting role as an advocate and starred as supporting artist with roles in Dil Diwana, Muqaddar Ka Sikandar, and Mr. Natwal Ali. Also, his first attempt at comedy was with Himmat Wala and Aaj Ka Daur, started doing main comedy roles from 1989 onwards, with the films like Shakka, Hum, Ghar Parivar, Kishan Kanhaiya, Bol Radha Bol, and continued through the 90s with comedy roles in Aankhein,
तकदीर वाला, मैं खिलाड़ी, तू अनाड़ी, दूल्हे राजा, साजन चले ससुराल, बड़े मियाँ, छोटे मियाँ, जुदाई, Andy number one. And even in early 2000s, he attempted versatile roles with the films like Akhiyo se goli mare, ये है जलवा, चलो इश्क लड़ाएं, सुनो ससुर जी and मुझसे शादी करोगी. His work as a comedian was notable in Himmat Wala and also in Aankhein, Kuli number 1 maybe. Starred in his own comedy television series that titled हंसना मत, जो कि आया था स्टार प्लस पे 2001 में एंड कम बैक करा इंडियन टेलीविजन पर विद अ कॉमेडी सीरीज हाय पड़ोसी कौन है दोषी ऑन सहारा वन. एंड स्क्रीन राइटर के तौर पे करियर की बात करें तो राजेश खन्ना रहे जिन्होंने उन्हें ब्रेक दिया था एज अ डायलॉग राइटर इन हिज फिल्म रोटी एंड देयर आफ्टर ही रोट डायलॉग्स फॉर फिल्म्स with Rajesh Khanna in the lead like Mahachor, चलिया बाबू, 50-50, नया कदम, धर्म काटा, मास्टर जी एंड नसीहत. सभी फिल्म्स हिट भी रही थी बॉक्स ऑफिस पे एंड कुछ सक्सेसफुल फिल्म्स भी रही उनकी जिसमें कि उन्होंने वर्क करा था राइटर और असिस्टेंट का इन डायलॉग्स इंक्लूडेड फिल्म स्टारिंग जितेंद्र लाइक हिम्मत वाला, जानी दोस्त, सरफरोश, जस्टिस चौधरी, हैसियत एंड सम मोर.
दोस्तों बात की जाए 1970s के दौर की तो 1971 में ही एक्टेड इन हाथी मेरे साथी, जो कि काफ़ी हिट फिल्म रही थी, साथ ही साथ हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म भी रही है एंड द बिगेस्ट ग्रॉसर एवर टिल देन, where he is credited with giving Salim Khan and Javed Akhtar their first chance to become screenplay writers by offering them work in Hathi Mere Sathi. Javed Akhtar accepted and said in an interview one day he went to Salim Saab and said that Mr. Devar had given him a huge singing amount with which he could complete the payment for his bungalow, जो कि आशीर्वाद है, whereas but the film's script was far from being satisfactory. He told us that if we could set right the script, he would make sure we got both money and credit, whereas Rajesh bought Rajendra Kumar's bungalow named Dimple in Carter Road promenade for 31 लाख in 1970s, तो उसका ही रीनेम करा था जो कि रखा गया था आशीर्वाद. राजेश खन्ना's 15 consecutive solo hit films रही हैं between 1969 to 70, जिसमें कि कुछ फिल्म्स रही जैसे आराधना, डोली, बंधन, इत्तेफाक, दो रास्ते, सफ़र, खामोशी, द ट्रेन, कटी पतंग, सच्चा झूठा, आन मिलो सजना, महबूब की मेहंदी, छोटी बहू, आनंद एंड हाथी मेरे साथी उनकी सोलो हिट्स रही हैं. तो वहीं 17 कॉन्जिक्यूटिव हिट फिल्म्स रही जिसमें कि लीड हीरो रहे हैं बतौर, जो कि सेम एरा था उनका 1969 to 71, जिसमें कि 15 में तो उन्होंने सोलो हीरो फिल्म्स करी हैं, बल्कि 2 नॉन सोलो हीरो फिल्म्स रही जो कि थी अंदाज और मर्यादा. तो वहीं बदनाम फरिश्ते जो कि 1971 में उनकी अनसक्सेसफुल रही बॉक्स ऑफिस पे, जबकि 72 में ही एक्टेड इन 11 रिलीजेस जिसमें कि तेलुगु फिल्म बंगारू बाबू, दैट ईयर हिज फिल्म्स अमर प्रेम, अपना देश, मेरे जीवन साथी जिन्होंने अर्न करा था मिलकर 5 करोड़. तो वहीं हिज अदर फिल्म्स ऑफ 1972 सच एज दिल दौलत दुनिया, बावर्ची, जोरू का गुलाम, शहजादा ने काफ़ी अच्छा अर्न करा था, 4.5 करोड़ से भी ज़्यादा. तो वहीं उनकी कुछ नेक्स्ट रिलीज़ रही जैसे कि अनुराग जो कि हिट रही थी. द फिल्म मालिक रिलीज इन द एंड ऑफ 1972 बट अनसक्सेसफुल रही बॉक्स ऑफिस पे. सिर्फ यही नहीं, उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस भी दिया था तेलुगु मूवी जिसका टाइटल था बंगारू बाबू, डायरेक्टेड बाय वी राजेंद्र प्रसाद इन 1973 एंड ऑल्सो वॉज हिट एट द बॉक्स ऑफिस. बात की जाए जो कि एज पर रिव्यू रहे हैं राजा रानी के, रिटन इन 2014 बाय द हिंदू न्यूज़पेपर, द फिल्म डिड वेल एट बॉक्स ऑफिस and taking into consideration the inflation as of 2014, the film would have grossed more than 100 crores. जो कि अटायर पहना गया था by Khanna was a sleeveless shirt and trouser, thick leather belt, shoes without socks and a black cap, जिसको द हिंदू रिव्यू ने मेंशन करा on a lesser actor the attire would have fallen flat, but Khanna as a small time thief carries it with characteristic elan. काफ़ी अच्छा रिव्यू दिया गया एज पर कि मतलब जो उनकी कॉस्ट्यूम थी वो इतना जस्टिस नहीं कर रही थी उनके साथ. Whereas he acted alongside Mumtaz in 8 films and they were neighbors and got along very well, which translated onto the screen. Mumtaz also mentioned that I would pull his leg and tease him about his fan following whenever Rajesh entered a hotel in Madras. There was a queue of 600 girls waiting to see him at midnight,
As a result, even I would get some importance as people would ask for my autograph as well. He was very generous with his associates and would पार्टी अलॉट काफ़ी जनरस नेचर रहा है राजेश खन्ना जी का। तो वहीं बात की जाए उनके पीक की, जो कि करियर का एक पीक टाइम रहा, ही वुड बी मॉब्ड ड्यूरिंग पब्लिक अपीयरेंसेस। फैंस किस्ड हिज कार would be covered with lipstick marks and lined the road, cheering and chanting his name, whereas female fans sent him letters written in their blood. There used to be a line of cars of his producers and hysterical fans outside his bungalow every day. तो वहीं actor Mahmood parodied him in Bombay to Goa, where the driver and conductor of the bus were called Rajesh and Khanna respectively. Even today, he remains the favorite of mimicry artists who copy his trademark style and dialogue delivery. टिल डेट काफ़ी नोन है और काफ़ी उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है कॉपीराइट से एक ट्रेडमार्क स्टाइल बन गया है इंडस्ट्री में। अमर प्रेम की फिल्मिंग के दौरान देयर वाज अ सीन दैट नीडेड टू बी शॉट एट हावड़ा ब्रिज विद अ बोट कैरिंग खन्ना एंड शर्मिला अंडर द ब्रिज। When the authorities ruled this scene out as they realized that if the public found that the star would be there, it may create a problems on the bridge and that it might collapse due to the number of people trying to get glimpse of their favorite actor. So when film critic Manojit Lahiri remembers girls married themselves to photographs of Rajesh Khanna. सिर्फ यही नहीं, cutting their fingers and applying the blood as sindoor, and Rajesh was God. There has never been such hysteria. मतलब उनका जो दौर था उस टाइम पे जो लड़कियां थी काफ़ी ज़्यादा पागल हुई रहती थी, उल्टी सीधी हरकतें करती थी, अपने हाथ काट के मांग भरना लाइक एक्टिविटीज़ करी हैं काफ़ी सारी लड़कियों ने, इनसेन एक्टिविटीज़। Other than this, 1973 में BBC also made a documentary on him named as Bombay Superstar. As a part of their Man Alive series, shooting began when he got married and his film Daag का premiere था. In the video, it can be noticed that Khanna was shooting for Aapki Kasam, whereas a textbook prescribed by the Mumbai University contained an essay, The Charisma of Rajesh Khanna. During that, Sharmila Tagore said in an interview with the Indian Express that women came out in droves to see Kaka, as they would stand in queues outside the studios to catch a glimpse. They would marry his photographs, they would pull at his clothes. Delhi girls were crazier for him than Mumbai girls. He needed police protection when he was in public. I have never seen anything like this before or since. जैसे उनके कमेंट्स रहे हैं, यहाँ तक कि जो उनकी को एक्ट्रेसेस रही हैं उन तक के कमेंट्स रहे हैं कि जो दिल्ली गर्ल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा क्रेजी थी मुंबई से। Many of the musical scores for Rajesh Khanna's film were composed by Lakshmikant Pyarelal, Sachin Dev Burman and R.D. Burman. The trio of Rajesh Khanna, Kishore Kumar and R.D. Burman went on to make number of popular films जिसमें की रही अलग अलग, कटी पतंग, अमर प्रेम, शहजादा, मेरे जवान साथी, अपना देश, आपकी कसम, नमक हराम, अजनबी, महाचोर, कर्म, फिर वही रात, कुदरत, अशांति, अगर तुम ना होते, हम दोनों, आवाज़ उनकी कुछ फिल्म्स रही हैं जिसमें कि इन तीनों का ट्रायो देखा गया है। Whereas Rajesh Khanna considered Guru Dutt, Meena Kumari and Geeta Bali to be his idols and said in an interview, my inspiration include Dilip Kumar's dedication and intensity
and Raj Kapoor's spontaneity were Devanand's style and Shami Kapoor's rhythm. इसके बाद 1976 to 78 इन 3 सालों में he acted in 7 films that were not commercially successful, but these films includes Mehbooba, बंडलबाज, त्याग, पलकों की छाँव में, नौकरी, चक्रव्यूह, जनता हवलदार, which were directed by Shakti, Samantha, Shami Kapoor, Deen Dayal Sharma, Miraj, Rishikesh Mukherjee, Basu Chatterjee, and Mahmood Ali, respectively, where Khanna persuaded Samantha to cast his sister-in-law Dimple Kapadia opposite him in Anurodh, whereas film starring Rajesh Khanna and directed Shakti Samantha tended to be commercially successful. तो वहीं महबूबा जो कि एक एक्सेप्शन रहा. The change from romantic and social movies to action-oriented multi-stars caused some decline of Khanna's career in terms of box office rating. The declaration of emergency in India had injured the masses, and this helped films having the lead actor revolting against corruption to become successes. तो वहीं actor Joy Mukherjee made Chaliya Babu a suspense thriller in 1977, which became the only successful film of his as a director. And the unexpected success of Chaliya Babu gave a boost to the career of Khanna. However, Khanna continued basically in solo hero, socially sober, household meaningful films during this era और काफ़ी सारी variety of characters play करे हैं उन्होंने films में various genres की. इस phase के दौरान he had box office hits also like महाचोर, भोला भाला, कर्ण, टिंकू, अनुरोध. तो वहीं खन्ना was the first choice of director Raj Kapoor for the lead role in Satyam Shivam Sundaram, but कुछ members थे from the Raj Kapoor camp जो अपोज थे खन्ना के to being in the lead, especially Rishi Kapoor. The role went on to Shashi Kapoor. 80s के दौर में when after the 1978 he starred in films like अमरदीप, फिर वही रात, बंदिश, थोड़ी सी बेवफाई, कुदरत, दर्द, धनवान, अशांति, अवतार, अगर तुम ना होते, सौतन, जानवर, आशा ज्योति, नया कदम, बाबू, आज का एमएलए, राम अवतार, शत्रु, इंसाफ, मैं करूँगा and some more films. तो वहीं डायरेक्टर भारती राजा decided to remake his 1978 Tamil box office hit film Sigappu Rojakal in Hindi with Khanna playing a psychopath. वहीं कमल हसन who played the same role in Tamil won South Filmfare Best Actor Award for his portrayal, but the Hindi film Red Rose of 1980 was seen as controversial by traditional and orthodox Hindi moviegoers and was not a commercial success. Tina Muneem and Rajesh Khanna became an on and off-screen couple of the 80s with movies such as 50-50, Surag, आखिर क्यों, सौतन, इंसाफ मैं करूँगा, अधिकार, अलग अलग, and Ram Avatar Agnihotri wrote that Tina Muneem showed the first sparks of the dedicated actress she would become in the films such as अलग अलग and अधिकार दोनों ही उन्होंने करी थी राजेश खन्ना के साथ. Whereas his on-screen pairing with Shabna
Shabana Azmi, Smita Patel, पद्मिनी कोल्हापुरे एंड पूनम ढिल्लन काफ़ी पॉपुलर पेयर अप रहा है 80s का। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने एक्टिंग भी करी है, मतलब मराठी फिल्म इंडस्ट्री में भी उन्होंने एक्टिंग करी है विद द मराठी हिट फिल्म सच एज सुंदर सतर्कर इन 1981. Kamal Hassan was a close friend of Khanna and starred in Hindi remakes of 3 Tamil films, originally starring Kamal, and the Kamal acted in 2 remakes of Khanna's films. Quoted in an interview to narrate how he experienced Khanna's stardom in an accident in 1985, where he probably hadn't been to a public theatre since he became a star. Moreover, he performed in successful multi-starrer films including Rajput, धर्म और कानून, पापी पेट का सवाल है, दिल नादान, घर का चिराग, जमाना. He did 3 movies with Jitendra that were धर्म काटा, निशान and मकसद. तो वहीं 84 की मकसद was the second highest ranked film in terms of box office results, earning gross 8.5 crores in आज का MLA राम अवतार, where Khanna played the character of corrupt politician. Viewers praised his role in the film. That was in 1985 he produced Alag Alag. Moreover, he worked in films of different genres जैसे कि tragedy film रही बाबू as a rickshaw puller, thriller film Red Rose में as a psychopath, political adventure in Awam, fantasy in Bundalbaz and Janwar, crime in फिर वही रात है and अंगारे, suspense in चक्रव्यूह and इत्तेफाक, कॉमेडी इन जोरू का गुलाम, बावर्ची, हम दोनों एंड मास्टर जी, एक्शन इन अशांति एंड ज़माना, फैमिली ड्रामाज एड्रेसिंग डिफरेंट इश्यूज इन आंचल, अमृत, अगर तुम न होते, एंड फिल्म्स एड्रेसिंग इश्यूज एंड सोशल कंसर्न्स दैट वर अवतार, नया कदम, आखिर क्यों. काफ़ी उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर्स अपनाए हैं, हर जेनर में उन्होंने अपने टाइम पे काम किया है और बखूबी हर किरदार को भी निभाया है. मोर ओवर दैन दिस, actors who went part of the cast of most of his films include Madan Puri, Ashok Kumar, Sujit Kumar, Prem Chopra, Azrani, Bindu, Vijay Arora, Rupesh Kumar, Deena Pathak and A.K. Hunger, who remained part of his working team from the start until the late 80s. The lyricist whom he preferred for his movies was Anand Bakshi. तो वहीं फिल्म्स बाय शक्ति समांता विद खन्ना जो कि लीड में रही. तो वहीं म्यूजिक बाय पंचम एंड लिरिक्स बाय आनंद बख्शी हैड पीपल्स वनिंग. The films Samantha directed without Khanna in the 80s were duds, whereas his other close friends from the film industry include Raj Babbar, J. Om Prakash, Prem Chopra, D. Rama Naidu, and Jitendra. तो वहीं celebrities of the post-2000 era like Madhur Bhandarkar say that they take at least 3 or 4 turns in Carter Road at that time just to see Khanna. Moreover, actor Irfan Khan stated in an interview, the kind of craze witnessed by Rajesh Khanna has not been duplicated by anyone. He was the biggest and the most real star Bollywood has produced. I would say stardom is that feeling of being possessed by your idol. You are so overwhelmed with euphoria, you lose touch with reality. काफ़ी नाम रहा है, हालांकि एट प्रेजेंट जो एक्टर्स हैं वो तक राजेश खन्ना जी को अपना आइडल मानते हैं.
90s और 80s के दौर में। मोर ओवर 80s का दौर जो था काफ़ी उनका नोन और मोर ओवर सक्सेसफुल देखा गया है। फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने एक्टर तो हैं ही, इसी के साथ साथ अपने पीछे एक लीगेसी भी छोड़कर गए हैं। जस्ट एज द पीएम जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रतिभा पाटिल lamented the passing away of the actor. In a press release, she said, I am saddened to learn about the passing away of Rajesh Khanna in his prime. As an actor, he was a heartthrob of the young generation of 70s who tried to model themselves on him and his style. Many celebrities who paid homage to him after his death. His prayer meeting, organized in a grand way at the Taj Lands and Hotel in Bandra, Mumbai on 21st July 2012, was attended by many. सिर्फ यही नहीं, काफ़ी celebrities who paid homage to him at his house after his death, जिसमें कि सारे ही ऑलमोस्ट फिल्म इंडस्ट्री के किरदार देखे गए, जस्ट लाइक मनोज कुमार, रंजीत, जितेंद्र, राकेश रोशन, रणधीर कपूर, आशा पारेख, यश चोपड़ा, ऋषि कपूर, शबाना आजमी, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, गोविंदा, सलमान खान, हेमा मालिनी, राम कपूर, महेश ठाकुर, हिमेश रेशमिया, साजिद खान, and his prayer meeting organized in a grand way at the Taj Lands and Hotel in Bandra, Mumbai, जिसमें कि नजर आए रीना रॉय, पद्मिनी कोल्हापुरे, पूनम ढिल्लन, नीतू कपूर, जया बच्चन, किरण राव, रणबीर कपूर, शक्ति कपूर, शशि कपूर and some more. सिर्फ यही नहीं दोस्तों, बल्कि उनकी एक पोस्टेज भी रिलीज़ करी गई थी बाय द इंडिया पोस्ट, जिसमें कि फीचरिंग खन्ना रहे हैं ऑन 3 मई 2013 को। ऑन हिज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी, अ ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ राजेश खन्ना वॉज अनवेल्ड एट बांद्रा बैंडस्टैंड, मुंबई में। चौक जो कि एक इंटरसेक्शन है इन गिरगांव हैज़ बीन नेम्ड सुपरस्टार राजेश खन्ना चौक इन हिज मेमोरी। तो वहीं पार्क एट लाजपत नगर, न्यू दिल्ली हैज़ बीन रीनेम्ड एज सुपरस्टार राजेश खन्ना पार्क इन हिज मेमोरी। अवार्ड्स और नॉमिनेशंस की बात की जाए तो ही वॉन 7 ऑल इंडिया क्रिटिक एसोसिएशन बेस्ट एक्टर अवार्ड्स एंड रिसीव्ड 10 nominations. Also won 4 Best Actor awards in the Bengali Film Journalist Association Award and received 25 nominations. 3 Filmfare Best Actor Award and 1 Filmfare Special Guest Actor Award in 1973 and received a Filmfare Special Award in 1991 after 25 years in the Hindi film industry, whereas received the Filmfare Lifetime Achievement Award at the 50th anniversary of Filmfare Awards ceremony in 2005 and also the recipient of IFA Lifetime Achievement Award in 2009. अपने करियर में जो कि उन्होंने पूरा अपना करियर दिया था फिल्म इंडस्ट्री को, उन्होंने काफ़ी जो है एक लीगेसी भी छोड़ी है अपने साथ साथ। मोर ओवर काफ़ी नंबर ऑफ यानी कि काफ़ी सारे अवार्ड्स भी अपने नाम लिए हैं। बात की जाए फिल्म के अगले किरदार अक्षय खन्ना की, यानी कि रोहन बलराज की, जो कि एक एक्टर हैं who appeared in Hindi films and he is the son of late Indian actor Vinod Khanna. He has also won numerous awards in his career, जिसमें कि Filmfare, Screen Awards and IFA Awards हैं, काफ़ी वेरियस कैटेगरी में।
जानते हैं उनसे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स सच एज आफ्टर स्टडीइंग इन किशोर नामित Kapoor Acting Institute in Mumbai. He made his acting debut in 1997 with the film Himalaya Putra. His next release was Border in 1997, जो कि emerged हुई थी as a critical and commercial success, earning him the Filmfare Best Debut Award and a nomination for Filmfare Award for Best Supporting Actor, where he rose to prominence with starring roles in the musical romantic drama films like Tal in 1999, comedy film like Dil Chahta Hai in 2001, which won him her Filmfare Award for Best Supporting Actor, whereas the romantic thriller Hamraz of 2002, जिसके लिए नॉमिनेट करे गए थे बेस्ट नेगेटिव रोल कैटेगरी के लिए, and the romantic comedies Hangama and the Halchal of 2004, the murder mystery 36 Chinatown in 2006, and the action thriller Race in 8, and the heist comedy Tismar Khan in 2010. He has also acted in 2010 comedy movie No Problem, and he continued to draw praise for her performances in the 1999 romance film The Hick, the 2002 psychological thriller Divangi, और 2007 में biographical drama Gandhi, My Father, and the 2010 action thriller film Akrosh. Following a 4-year hiatus since his last release, Gali Gali Chor Hai, in 2012, Khanna made his comeback with an antagonistic appearance in the action comedy film Dishoom and appeared as an investigative cop in two thriller releases of 2017, the crime film Mom and the murder mystery Ittifaq. दोस्तों जानेंगे उनके करियर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, जस्ट एज की डेब्यू, करियर स्ट्रगल और ब्रेक थ्रू पीरियड रहा उनका 1997 टू 1999, वेयर एज जिसमें कि उन्होंने डेब्यू करा था एक्टिंग करियर में विद पंकज पराशर्स रोमांटिक ड्रामा मूवी हिमालय पुत्र से, जिसमें कि को स्टारिंग रहे थे उनके फादर विनोद खन्ना अलॉन्ग विद हेमा मालिनी, सतीश शाह, जॉनी लिवर, डेनी डेंजोंगपा एंड अमरीश पुरी, जिसमें कि उनकी परफॉर्मेंस ने अर्न करा था उनके लिए स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू, बट द फिल्म अंडर परफॉर्म्ड एट द बॉक्स ऑफिस बावजूद पॉजिटिव रिव्यूज़ के. Later that year, Khanna starred in J.P. Datta's war drama Border alongside Sunny Deol, Sunil Shetty and Jackie Shroff, set during the Indo-Pakistan War of 1971. The film was about the events of the Battle of Longwala and saw Khanna play the real-life role of Dharmveer Singh Maan, a commander who is also a part of the battle. So my film generated positive reviews and eventually proved to be the second highest grossing Bollywood film of 1997. तो वहीं बॉर्डर वॉन 4 Filmfare Awards, जिसमें कि रहा बेस्ट मेल डेब्यू ट्रॉफी फॉर खन्ना. He was also nominated for Best Supporting Actor at the same ceremony. उनकी final release of 1997 was a romance film Mohabbat, in which he starred alongside Madhuri Dixit and Sanjay Kapoor. Whereas the film received a negative critical reception and was commercially unsuccessful. Following years में Khanna starred opposite Jyotika and Priyadarshan's romantic drama film डोली सजा के रखना in 1998, जिसमें कि पोर्ट्रे करा था एक रिच पर्सन का who falls in love with Jyotika's character. सिर्फ यही नहीं बल्कि ही स्टांट उनकी कुछ
स्टार रहे अपोजिट ऐश्वर्या राय एंड अनिल कपूर इन सुभाष घई's म्यूजिकल लव ट्रायंगल फिल्म ताल, in which he played Manav Mehta, जो कि एक son है of a wealthy rich man who falls in love with a poor aspiring singer. फिल्म जो है हाईली एंटिसिपेटेड रही थी क्रिटिक्स की तरफ से और प्रूव हुई थी टू बी द थर्ड हाईएस्ट अर्निंग फीचर फिल्म ऑफ 1999, becoming his first commercial success since Border. तो वहीं फाइनल फिल्म उस साल की वॉज लतीफ़ बिनू's स्टार क्रॉस रोमांस द हिक, in which he featured opposite Sonali Bendre as a Hindu boy who falls in love with a Muslim girl. The role was played by Sonali Bendre. हालांकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पे डिसअपॉइंटमेंट के साथ देखी गई है। क्रिटिकल रिकॉग्निशन उन्हें मिली थी 2000 में, यानी कि 2001 और 2 में उन्हें मिला क्रिटिकल रिकॉग्निशन, जिसमें कि उन्होंने ब्रेक लिया था, यानी कि 2 साल तक एब्सेंस में रहे फ्रॉम द फुल टाइम एक्टिंग एंड अपीयर्ड इन फरहान अख्तर्स कमिंग ऑफ एज कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिल चाहता है in 2001 alongside Saif Ali Khan and Amir Khan. Set in Mumbai, it focuses on a major period of transition in the lives of 3 young friends, where Khanna featured as one of the friends named Siddharth Sinha, जो कि एक क्वाइट और रेटिसेंट बॉय था। तो वहीं अब्बास मस्तान रोमांटिक थ्रिलर मूवी हमराज in 2002, co-starring Bobby Deol and Amisha Patel, was Khanna's next film release, and he played the main antagonist Karan Malhotra, a convincing con artist whose girlfriend, played by Patel, marries a rich man जिसका किरदार निभाया था देओल ने to secure his wealth. तो वहीं बात की जाए प्रेज़ की, तो उनकी परफॉर्मेंस ने रिसीव करा था काफ़ी क्रिटिकल प्रेज एंड ही वॉन द आईफा अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल एंड नॉमिनेशंस फॉर द फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल ऑल्सो फॉर द फिल्म हमराज. And that year, he also starred as a lawyer in Anis Bazmi's thriller movie Diwangi alongside Ajay Devgan and Urmila Matondkar, जो कि फाइनेंशियल सक्सेस रही है, जिसमें कि नॉमिनेट हुए थे फॉर द स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर.
दोस्तों, बात की जाए एक्टर कादिर खान के एज अ स्क्रीन राइटर के तौर पे, तो काफ़ी उन्होंने फिल्म्स के लिए डायलॉग्स लिखे हैं एंड साथ ही साथ काफ़ी राइटर्स के साथ काम भी करा है, जैसे कि मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा फॉर देयर फिल्म स्टारिंग अमिताभ बच्चन. Besides Amitabh, he was the only one to work in the rival camps of Mehra and Desai. फिल्म्स विद देसाई जैसे कि रही धर्मवीर, गंगा जमुना सरस्वती, कूली, देश प्रेमी, सुहाग, अमर अकबर एंथनी एंड फिल्म्स विद प्रकाश मेहरा जैसे कि ज्वालामुखी, शराबी, लवारिस, मुकद्दर का सिकंदर. तो वहीं अमिताभ बच्चन की फिल्म्स के लिए और साथ ही साथ पॉपुलर डायलॉग्स और स्क्रिप्ट भी लिखी हैं उन्होंने बाय, जैसे कि कुछ नोटेबल एग्जाम्पल्स रहे हैं मूवीज़ के: मिस्टर नटवरलाल, खून पसीना, दो और दो पाँच, सत्ते पे सत्ता, इनकलाब, गिरफ्तार, हम एंड अग्निपथ. अग्निपथ के लिए जिसमें कि बच्चन रहे had received the National Film Awards and was in demand by the South Indian film production houses जैसे कि Padmalya and major filmmakers of southern cinema such as Narayana Rao Dasari, K. Bapaya, K. Raghavendra Rao, Rama Rao Tatineni and some more also. बात की जाए उनकी कुछ फिल्म्स की, जैसे कि हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, हैसियत, सिंहासन, और एज अ रिपोर्टेड इन द हिंदू, ही डिडंट जस्ट ट्रांसलेट द ओरिजिनल फिल्म्स इनटू हिंदी बट transposed them into a new north setting, culture, context and also language. ही वॉज प्रेफर्ड डायलॉग राइटर फॉर द हिंदी फिल्म्स जो कि डायरेक्ट करी गई थी बाय के रघुवेंद्र राव. नारायण दसारी के बपाया के साथ उन्होंने मैक्सिमम अपना करियर में काम करा है एंड ऑल्सो रोट डायलॉग्स इन अदर सक्सेसफुल फिल्म्स इन द लेट 80s टू लेट 90s, जिसमें कि रही मेरी आवाज़ सुनो, अंगार, जेल यात्रा, कातिलों का कातिल, वक्त की आवाज़, कुली नंबर 1, मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, कानून अपना अपना, कर्मा, सल्तनत, बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, हम शक्ल, साजन चले ससुराल, हीरो हिंदुस्तानी, आंटी नंबर 1 एंड राजा जी. ऑल्सो रोट डायलॉग्स फॉर फिल्म्स ऑफ राकेश रोशन जैसे कि खून भरी मांग, काला बाजार, खुद गर्ल्स जो कि मोस्ट पॉपुलर रहे हैं. अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड विनर रहे फॉर साहित्य शिरोमणि अवार्ड फॉर हिज वर्क एंड contributions to Hindi film industry and cinema. Was recognized twice by the AFMI for his achievements and service to Muslim community in India. तो वही जनवरी 26 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑनर करे गए थे पॉस्टुमसली विद पद्मश्री अवार्ड. एंड फिल्म फेयर अवार्ड्स की बात करें तो अवार्ड विनर रहे मेरी आवाज़ सुनो के लिए बेस्ट डायलॉग, बेस्ट कॉमेडियन फॉर बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी एंड अगेन बेस्ट डायलॉग फॉर अंगार. नॉमिनेट की बात की जाए तो नॉमिनेट करे गए थे एज बेस्ट कॉमेडियन के लिए फॉर हिम्मत वाला, सिक्का, हम, आँखें, आज का दौर, कूली नंबर 1, साजन चले ससुराल, दूल्हे राजा के लिए नॉमिनेट हुए थे. बात करते हैं फिल्म के अगले किरदार की, जो कि रहे थे हेलेन एज जानकी इन द फिल्म. हेलेन जो कि जानी जाती हैं अपने नाम से, जबकि रियल नेम है हेलेन एन रिचर्डसन खान, is an Indian actress and also a most popular dancer in the film industry. Has appeared in over 700 films, making her a prolific performer in Hindi cinema. Known for her supporting character roles and guest appearances in a career spanning 70 years,
Adding up to it, has received two Filmfare Awards and is often cited as one of the most popular Nautch dancer of her time. In 2009 में she was awarded with Padma Shri by the Government of India and was the inspiration of four films and also a book. करियर की बात करें उनके तो she was introduced to Bollywood when a family friend and actress known as Kuko helped her find jobs as a group dancer in the films Shabistan in 1951, Avara also in 1951, was soon working regularly and was featured as a solo dancer in films such as Alif Lela, Hoore Arab, also featured as street singer in films like Mayur Punk in 1954. मेजर ब्रेक की बात की जाए तो मिला उन्हें 1958 में at the age of 19 when she performed on the song मेरा नाम चिन चिन चू in शक्ति समांता's film हावड़ा ब्रिज में, जो कि गाया गया था by गीता दत्त. After that, offers started pouring in throughout the 1960s, 70s. उनके इनिशियल करियर के दौरान गीता दत्त many songs sung by her in the plot of many of the films of this period. She performs a song or dance, then is killed, leaving the film's good woman available for the hero. And performed on stage in London, Paris, Hong Kong. 73 में Helen, Queen of the Nautch Girls, a 30-minute documentary film from Merchant Ivory Films was released. So when Anthony Corner directed and narrated the film, a book about her was published by Jerry Pinto in 2006, titled The Life and the Times of an H-Bomb, which went on to win the National Film Award for Best Book on Cinema 2007 में. Writer Salim Khan helped her get roles in some of the films. He was co-scripting with Javed Akhtar, Imam Dharam, Dawn, Dostana and Sholay as well. Officially retirement लिया उन्होंने movies से 1983 में, but she has since then appeared in a few guest roles such as Khamoshi, the musical, Mohabbatein. Also made a special appearance as the mother of real-life stepson Salman Khan's character in the film Hum Dil De Chuke Sanam, and also appeared in Humko Deewana Kar Gaye in 2006. Also was selected for the Padma Shri Awards in 2009 along with Aishwarya Rai and Akshay Kumar. Appear हुई हैं as a judge in the semi-finals and finals of 2009's India's Queen television series के लिए. अवार्ड्स एंड ऑनर्स की बात करें तो पद्मश्री उन्हें मिला था 2009 में. was nominated for the film गुमनाम, शिकार, ऐलान, खामोशी द म्यूजिकल के लिए in the category of Filmfare Award for Best Supporting Actress में. तो वहीं फिल्म्स रहीं such as अवारा, अलिफ लैला, संतोषम, हलाकू, मिस्टर लंबू, चलती का नाम गाड़ी, यहूदी, सावन, अनाड़ी, हम हिंदुस्तानी, बहाना, हाफ टिकट, चाइनाटाउन, आया तूफान, वो कौन थी, गुमनाम, खानदान, काजल, जाल, शिकार, इंतकाम, आंसू बन गए फूल, प्यार का सपना, कारवा, पुरस्कार, उपासना, अधिकार, परवाना, मन मंदिर, राखी और हथकड़ी, दिल दौलत दुनिया, अपराध, जख्मी, इनकार, डॉन, अब्दुल्ला, दोस्ताना, हीरो का चोर, सवाल, अनजाने, द अननोन जैसी काफ़ी सारी फिल्म्स रही हैं उनके करियर की. जिसमें कि बात की जाए रीसेंट फिल्म्स की तो रही अगली शादी 2 द
पगली शादी गो दादी जो कि 2021 में रही। बात करते हैं निरूपा रॉय की, जो कि फिल्म में निभा रही थी किरदार गीता का, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस हैं और हिंदी फिल्म्स में काफ़ी ज़्यादा नोन है। एंड बेसिकली जो नोन पोर्ट्रे रहा है उनका ट्रेजेडी सॉरो में रहा, फॉर also known for her acting ability and uncharitably called the Queen of Misery in Hindi cinema circle, was active from 1946 to 1999 and was best known for playing motherly roles. अपीयर हुई हैं ओवर 250 फिल्म्स में एंड वॉन फिल्म फेयर अवार्ड थ्रू आउट हर करियर एज वेल एज बीइंग नॉमिनेटेड फॉर वन। 2004 में रिसीव करा था फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बात की जाए उनके करियर की तो 46 में निरूपा रॉय एंड her husband responded to an advertisement in a Gujarati paper looking for actors, was selected and started her acting career with the Gujarati film Ranak Devi. Same year she acted in her first Hindi film Amar Raj. One of her popular films was Do Bigha Zameen in 1953. Largely played mythological characters in the films of the 40s and 50s. In Har Har Mahadev, she played the role of Parvati Devi, opposite Trilok Kapoor, who played the role of Shiva, and the film was the top grosser of the year. Her image of a goddess was very strong and people would visit her home and seek her blessings. Among co-stars were Trilok Kapoor, जिनके साथ उन्होंने 18 फिल्म्स करी हैं, एंड ऑल्सो co-actors were भरत भूषण, बलराज सहानी एंड अशोक कुमार। 1970s की बात की जाए तो her role as mother to the characters played by Amitabh Bachchan, Shashi Kapoor made her name synonymous to the improvised, suffering mother. Her role in Diwar and its dialogue with reference to a mother and son काफ़ी यूज़ करे गए हैं। फिल्म्स की बात करें उनके करियर की तो रही सच एज उधार, राम जन्मा, दो बीघा ज़मीन, नौलखा हार, दुर्गा पूजा, चालबाज, छाया, बेजुबान, कौन अपना कौन पराया, बेनज़ीर, शहनाई, फूलों की सेज, अभिनेत्री, प्यार का मौसम, घर घर की कहानी, माँ और ममता, कच्चे धागे, दीवार, अमर अकबर एंथनी, अनुरोध, आँख का तारा, प्रतिकार, इंतकाम, मर्द, गिरफ्तार, सरफरोश, आंसू बन गए अंगारे, जहाँ तुम ले चलो एंड लाल बादशाह। रानी रूपमती रही उनकी 1957 की, और काफ़ी सारी फिल्म्स रही हैं और काफ़ी पसंद भी करी गई हैं इन द फिल्म्स। बात की जाए अवार्ड्स और नॉमिनेशंस की तो अवार्ड विनर रही थी इन द फिल्म फेयर अवार्ड्स इन द कैटेगरी ऑफ बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फॉर द मूवीज़ मुनीम जी, छाया, शहनाई के लिए, जबकि नॉमिनेट करी गई थी फॉर द मूवी दीवार, एंड ऑल्सो वॉन Lifetime Achievement Award in her career. ओम शिवपुरी जो कि नज़र आए एज कैप्टन धर्मदास इन द फिल्म, जो कि एक जाने माने इंडियन थिएटर एक्टर, डायरेक्टर और कैरेक्टर एक्टर हैं हिंदी फिल्म्स में। एडिंग अप टू इट अ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा न्यू दिल्ली से एलुमिनी रहे हैं, became the first chief of the National School of Drama Repertory Company in 1964 and one of its actors, later founded an important theatre group of its era in New Delhi, Deshantar. एक लीगेसी भी उन्होंने छोड़ी है अपने पीछे, सच एज राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी organizes a drama festival every year in the memory of Om Shivpuri.
The Om Shivpuri Memorial Drama Festival is a 5-day festival that opens on 16th October, जो कि उनकी डेथ एनिवर्सरी पे ओपन अप होता है। फिल्म्स की बात करें उनके करियर की तो started his film career in 1974 with Money Calls Ashad Ka Ek Din, soon followed by Gulzar's Koshish in 1972, later shifted to Bombay in 1974। करियर स्पैन रहा 2 decades का। एंड एक्टिंग की बात करें तो he has acted in over 175 Hindi films while playing roles as varied as villains to supporting cast। उनके करियर की कुछ फिल्म्स रहीं जैसे कि अशद का एक दिन, नमक हराम, आंधी, शोले, जीवन ज्योति, मौसम, बालिका वधू, किताब, फरिश्ता या कातिल, तुम्हारे लिए, इंसाफ का तराजू, फिर वही रात, बंदिश, द बर्निंग ट्रेन, नसीब, कुदरत, खून की टक्कर, मेरी आवाज़ सुनो, ज़माने को दिखाना है, बेमिसाल, पेंटर बाबू, डिस्को डांसर, मास्टर जी, गुलामी, अलग अलग, देखा प्यार तुम्हारा, मददगार, आखिरी रास्ता, सीतापुर की गीता, नामुमकिन, जख्मी औरत, गोला बारूद, दाता, अपना देश पराए लोग, कसम सुहाग की, अमीरी गरीबी, नाग नागिन, वीरू दादा, खूनी रात, नरसिम्हा, हमला, जुल्म की हुकूमत, पुलिस वाला, आखिरी संघर्ष जैसी काफ़ी सारी फिल्म्स रही हैं उनके करियर की। एंड मोस्ट नोटेबल एक्टर भी रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। जाए बात करते हैं फिल्म के अगले किरदार जो कि था सत्येंद्र कपूर जी का एज सत्यन नजर आए फिल्म में। वॉज एन इंडियन कैरेक्टर एक्टर इन बॉलीवुड फिल्म्स। एक्टिंग की बात करें तो करी ही हैज़ एक्टेड इन 390 फिल्म्स अराउंड। मोस्ट रिमेंबर्ड रोल रहा है उनका रामलाल का इन द मूवी शोले, 1975 में रिलीज हुई थी, एंड एज अमिताभ बच्चन फादर इन यश चोपड़ा's फिल्म दीवार। उनकी कुछ और नोटेबल मूवीज़ रही हैं जैसे कि कटी पतंग, यादों की बारात, अमर प्रेम, अनुराग, खोटे सिक्के, डॉन, बेनाम, जंजीर, आविष्कार, मजबूर, नमक हलाल, काला पत्थर, अंगारे,
मिस्टर नटवरलाल जैसी काफ़ी और फिल्म्स। करियर की बात की जाए तो शुरुआत करी थी अपने करियर की एज अ स्टेज एक्टर इन 1952 with the Indian People's Theatre Association in Bombay. Career span from the early 1960s to the early 2000s with over 390 films to his credit. किरदार की बात की जाए तो he mostly played supporting roles as a father, relative, uncle, police officer, doctor. Villainous roles काफ़ी निभाए हैं. His work in many films with Rajesh Khanna, Amitabh Bachchan, Mithun Chakravarti, Jitendra in the lead were noteworthy. फिल्म्स की बात करें तो फिल्म्स रही हैं उनकी करियर की जैसे कि काबुली वाला, प्रेम पत्र, बंदनी, नूर महल, डाकघर, बॉक्सर, लेडी किलर, सपनों का सौदागर, खिलौना, जाने अनजाने, रखवाला, नाग पंचमी, रास्ते का पत्थर, सवेरा, दो गज जमीन के नीचे, बाबुल की गलियां, जंजीर, कीमत, हिंदुस्तान की कसम, हाथ की सफाई, बिदाई, शोले, धोती, लोटा और चौपाटी जैसी काफ़ी फिल्म्स रही हैं, नोटेबल रहे हैं अपने फिल्मी किरदार के लिए।
दोस्तों बात करेंगे अगले किरदार की जो कि निभाया था चंद्रशेखर जी ने पुलिस इंस्पेक्टर का इन द फिल्म is an Indian name and may refer to a number of individuals. The name comes from the name of incarnation of the Hindu god Shiva जो कि उनके बेस पे था। उन्हीं के नाम से मिलते जुलते काफ़ी और भी किरदार रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में। बात की जाए पिंचू कपूर की जो कि किरदार निभा रहे थे जॉन का इन द फिल्म is an Indian actor born in Rawalpindi, पंजाब, ब्रिटिश इंडिया के दौरान 1929 में काफ़ी सारी हिंदी फिल्म्स में एक्ट करा है 1970s और 80s के दौरान। करियर लास्टेड फ्रॉम 1969 to 89. Best remembered for his role in the films such as Roti, खुद्दार, डॉन, अवतार एंड फिल्म्स की बात करें तो नज़र आए इन द फिल्म्स लाइक यहूदी, दो बूंद पानी, सिद्धार्थ, रोटी, हमराही, उलझन, सलाखें, अदालत, इमाम धर्म, ड्रीम गर्ल जो कि 1977 में रिलीज़ हुई थी, फॉलोअप में मुक्ति, अली बाबा मार्जिना, तुम्हारे लिए भोला भाला, साजन बिना सुहागन, बदलते रिश्ते, दुनिया मेरी जेब में, रत्नदीप, खानदान, सुनैना, गेस्ट हाउस, कमांडर, अवतार, आदमखोर, आपके साथ, मजलूम, आखिरी संघर्ष, इंसानियत के दुश्मन, फर्ज की जंग जैसी काफ़ी फिल्म्स करी हैं उन्होंने अपने करियर के दौरान। तो वहीं जगदीश राज जो कि फिल्म में किरदार निभा रहे थे रघु का एक बॉलीवुड एक्टर हैं हु होल्ड्स अ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर बीइंग द मोस्ट टाइपकास्ट एक्टर इन द इंडस्ट्री। प्लेड अ पुलिस इंस्पेक्टर इन 144 फिल्म्स जो कि एक काफ़ी अच्छा नंबर है। बात की जाए उनके अर्ली करियर की और अर्ली लाइफ के करियर की तो he was born in 1928 in the town of सरगोड़ा, ब्रिटिश इंडिया जो कि अब पाकिस्तान में है। Had the record of playing a police officer in various Bollywood films. Later on, some of his popular movies जैसे कि रही दीवार, शक्ति, मजदूर, गोपीचंद, जासूस, सिलसिला, बेशरम, आईना and also played in आदित्य पंचोली's फिल्म में फादर का किरदार यानी कि आदित्य पंचोली के फादर का किरदार निभाया था इन नामचीन में 1991 में। Although he occasionally played a villain and a couple of times played a judge, was best known for being a cast record of police inspector. After Shafi Inamdar, he holds the Limca Book of Record for most memorable policeman ever. उनके करियर की कुछ फिल्म्स रही जैसे कि एक ही रास्ता, सीमा, सीआईडी, मधुमती, धूल का फूल, कंगन, कानून, काला बाजार, प्यार का सागर, पासपोर्ट, एक महल हो सपनों का, एक दिल, 100 अफसाने, वक्त, बाजी, संघर्ष, फरिश्ता, अभिलाषा, सच्चा झूठा, उपासना, ऐलान, दास्तान, विक्टोरिया नंबर 203, जंगल में मंगल, दो चोर, बॉबी, दोस्त, जहरीला इंसान, धर्मात्मा, दफ़ा 302, आईना, चिंगारी, मामा भांजा, राम कसम, दिल का हीरा जैसी काफ़ी सारी फिल्म्स करी हैं उन्होंने। फॉलोअप में रही हैं सच एज आखिरी संघर्ष जो कि 2001 में आई, मेरी बीवी का जवाब नहीं जो कि 2004 में आई, उनकी फाइनल फिल्म रही थी इन द इंडस्ट्री। तो वहीं बात करते हैं फिल्म के अगले किरदार की जो कि था जेल इनमेट का
राम मोहन निभा रहे थे फिल्म में किरदार। राम मोहन जो कि एक काफ़ी नाम है, एक इंडियन एनिमेटर भी हैं, साथ ही फिल्म इंडस्ट्री में title designer, design educator, and also known as father of Indian animation, was a veteran in the Indian animation industry. करियर की शुरुआत करी थी एट द कार्टूनिस्ट फिल्म यूनिट से, फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1957 में चेयरमैन हैं और साथ ही चीफ क्रिएटिव ऑफिसर भी हैं एट ग्राफिटी मल्टीमीडिया, मुंबई बेस्ड एनिमेशन कंपनी जो कि इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में। Later on had won a National Film Award for Best Non-Feature Animation Film twice. You Said It 1972 में आई थी, Fire Games in 1983 में। Was awarded a Lifetime Achievement Award at the 2006 Mumbai International Film Festival में and was also awardee of Padma Shri, the fourth highest civilian honor 2014 में। करियर की बात करें तो worked as an animator with the films division till late 1960s, later founded Ram Mohan Biographics in 1972. Ultimately merged with UTV Toons, a division of United Studios Limited में 1998 में जो merge up हो गया था, and started out by doing character design and storyboards of This Our India, an animated film थी जो कि अडेप्ट करी गई थी from a book by मिनू मसानी से। करियर की फिल्म्स की बात करें तो रही सच एस चाचा जिंदाबाद, चंबे दी कली जो कि पंजाबी मूवी थी, आग, केओस जो कि एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म थी, बाप रे बाप अगेन एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म जिसमें कि उन्होंने विन करा था नेशनल अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म ऑन फैमिली प्लानिंग, हसीना मान जाएगी, लज्जो अगेन अ पंजाबी मूवी, भुवन शोम, नानक दुखिया सब संसार, यू सेड इट, प्रतिज्ञा, शतरंज के खिलाड़ी, 2 और 2 5, इंसाफ का तराजू, नदिया के पार, कामचोर, रामायण, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, मीना जैसे कुछ शोज करी हैं, लिमिटेड मूवीज़ करी हैं लेकिन अवार्ड विनिंग रही हैं उनके करियर में।